एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजियो एल्केमी। एज यू नो आई हैव स्टार्टेड माय के टेप सीरीज़, जिसमें कि मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप कैसे फ्रॉम अपर लिम टू लोअर लिम जो हमारे डिफरेंट मसल्स हैं उनको आप कैसे टेप कर सकते हो विद 100% प्रोफिशिएंसी। एट द सेम टाइम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू अपलोड एवरी मसल फ्रॉम अपर लिम टू लोअर लिम एज डिसाइडेड. So without any further delay, let us start the first muscle which we are going to talk about is your deltoid from the upper limb. Let us start with the deltoid muscle first. So as you can see, the origin and insertion. So we have three origin points. First is for your anterior fibers जो कि आपके anterior side पे present होती है muscle. Then middle fibers जो आपकी middle deltoid होती है. And then we have is the posterior fiber जिसे हम rear deltoid भी कहते हैं. So जो origination है muscle का, it is from the anterior border of the upper surface of your lateral 1/3 of the clavicle. Then जो middle area, जो middle deltoid के लिए जो origin है वो है lateral border of upper surface of acromion process. And then जो posterior fibers है उसके लिए posterior border of spine of scapula से वो originate होती है, then it get inserted over here. Now the insertion point is deltoid tuberosity of the humerus. It is a sensitive area about halfway down the arm bone on the midsection. The nerve supply for this muscle is your C5 and C6, which is your axillary nerve. So as you can see in this diagram, this is your anterior portion of the deltoid, this is your middle portion of the deltoid, and this is your rear deltoid from the posterior aspect जो कि हम इसे देख रहे हैं. Okay, now let us talk about how we can tape the deltoid muscle. So first of all, you have to cut down a Y strip of the tape, then adhere the base of the Y to the insertion of deltoid muscle. So ये हमारा insertion point था. तो जो Y का जो starting point है हम उसको यहाँ पे start करेंगे. उसके बाद हमें arm को abduct करना है, abduct the shoulder and apply the tape to the anterior fibers of the deltoid. So arm को abduct कर रहे हैं, then we have to start taping the anterior fibers of the deltoid and we have to stop the taping over here. Then next you have to internally rotate the shoulder and horizontally adduct the shoulder. यानी कि आप पेशेंट को बोलोगे कि horizontal adduction करे या फिर अपने opposite shoulder को टच करे, then this area will be stretched. अब हम जो हमारा posterior tail है हम उसको stick करेंगे. So again you will not provide any stretch onto this region and उसके बाद हम यहाँ पे stretch apply करेंगे और जैसे ही हम इसको posterior border पे paste करेंगे तो again यहाँ पे भी कोई stretch नहीं होगा. Okay, so that is how you tape the muscle. First of all, arm abduction के साथ anterior जो tail है and internal rotation and horizontal adduction के साथ आप posterior tail को stick करोगे and the complete taping will look like this. So as you can see, a perfect Y is there. एक perfect Y बन रहा है हमारा anterior fibers पे and posterior fibers पे. Okay, so this is the complete taping. Thank you for watching this video till the end. And do not forget to subscribe to see such more content. At the same time, do let me know in the comment box that what are the other topics you want to learn from my side. Thank you.